Now, the battle between Captain Amrinder Singh and Navjot Singh Sidhu continues. 48 hours after Sonia Gandhi's peace meet, there are no signs of truce as yet. In fact, both Sidhu and Amrinder are busy meeting party leaders to garner support. With only 6 months left for the polls, will Gandhis be able to broker truce formula is the question. In never-before-par tussle, split in the Punjab Congress wide open. The Amrinder versus Sidhu face-off, threatening to disrupt Congress's carefully laid out strategy 6 months before state polls. 48 hours after meeting Sonia Gandhi, Amrinder baiter Navjot Singh Sidhu continues to rally support. Meeting loyalists and anti-Amrinder camp members, eyeing an takeover as Punjab Congress chief. पंजाब के लोग चाह रहे हैं, पंजाब का यूथ चाह रहा है, पंजाब का किसान चाह रहा है, पंजाब का सिख वोटर चाह रहा है। जो साढ़े सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी का मैं धन्यवाद करता हूं, जिनकी सोच अच्छी है, जो इनको प्रधान बनाने जा रहे हैं। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਮੈਟਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। Amrinder, who is reportedly miffed with possible elevation of his bitter rival, wants an apology first for public outbursts against him by Sidhu. The Congress on its part has officially downplayed the rift. State MLAs are meeting on Monday to put a stamp of approval on High Command's move. On Sunday, Punjab Congress MPs met at Pratap Singh Bajwa's residence in Delhi, choosing to stay tight-lipped on being asked about the meet. Captain Amrinder met Sidhu's arch-rival Bajwa at his residence along with Assembly Speaker Rana KP Singh and Rana Gurmeet Sodhi on Saturday. Sources tell India Today that several senior leaders, including Bajwa, have opposed Sidhu's possible appointment as Punjab Congress chief. जिंदा पार्टियों में हमेशा डिफरेंसेस रहते, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस गेयर्ड अप है और आते टाइम में हम मजबूती से सारे के सारे लीडर्स एक स्टेज पर होंगे, इलेक्शंस में जाएंगे, इलेक्शन जीत कर आएंगे। As many as 10 Congress Punjab MLAs meanwhile urged the party high command not to let down Captain, claiming that he's the tallest leader, and demanded an apology from Sidhu. Is Sidhu's ambition denting Congress just 6 months before all-important polls? And can Gandhi still broker peace? With inputs from Ashutosh Mishra in Delhi, Bureau Report, India Today. Now, as all eyes are on the Parliament's monsoon session, which begins on Monday, while the centre wants orderly session, opposition is in no mood to relent. A bid to broker peace was made on Sunday with the Prime Minister Modi chairing an all-party meet. The opposition has issued, in fact, also raised several issues there, including COVID pandemic, price rise and jobs to corner the government. Let's take a listen as to what may be discussed. A politically significant monsoon session, replete with face-off on the cards. A bid to broker peace was made at the all-party meet on Sunday. In the all-party meet, led by PM Modi himself, PM also called for constructive debate. प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। जो मुद्दा उठाना चाहते हैं, नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। While the government wants orderly session, the opposition is in no mood to relent. This is the first session after the devastating second wave of the COVID pandemic. The opposition has a handy tool to take on the government over the COVID response. The government is also facing heat over high fuel prices. Price rise and jobs are too generating political heat. Opposition is also targeting the government over farm laws and the protests by farm groups. Congress is also raking up the border row
with China and the Rafale deal. पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है जिसकी अमन शांति और भाईचारिक सांझ बहुत इम्पेरेटिव है उस स्टेट के लिए, लेकिन ये कृषि कानूनों ने ऐसा पैदा कर दिए हैं हालात कि पंजाबी ही पंजाबी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जो इस बॉर्डर स्टेट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में बैठे लोग इस चीज़ का और काफ़ी सारी ऐसी पार्टियां जो इन ऐसे लोगों के साथ नाता रखती हैं, गलत खाड़कूवाद के साथ नाता रखती हैं, वो इन चीज़ों का एडवांटेज ले रही हैं। तो इसका हल करना बहुत अति ज़रूरी है। We want what the people are concerned about. Right now, the horrendous COVID situation, the terrible mismanagement by the government of it, and the vaccination policy, because every day people are lining up across the country in vaccination centers and there aren't enough vaccines. Sonia Gandhi has entrusted Mallikarjun Kharge to bring about a synergy with other opposition parties. चाइनीज बॉर्डर इशू, ये बॉर्डर इशू तो उठाने के लिए हमको सदन में राहुल जी की भी इच्छा है और ये सदन में भी हम उठाएंगे। समय जैसा मिलेगा उसी तरीके से एक एक इशू पे हम सारे मुद्दों को उठाएंगे। The battle lines are clearly drawn. The ruling BJP is keeping the NDA allies in loop over counter strategy, holding a huddle after Modi's all-party meet. 38 bills are pending in the parliament. 17 new bills are listed for introduction and 9 bills are listed for passage. The government refers to the earlier talks on the farmer protest, adding that it will go by Business Advisory Panel's recommendations on the issue. इससे पहले भी चर्चा हो गया और बीएसए में और जो नोटिस आता है वो देख के बीएसए में सूक्त निर्णय हम करेंगे। हम तो चर्चा से भाग नहीं रहे, क्योंकि जो कुछ भी जो पारित हुआ है वो भी चर्चा होके ही पारित हुआ है। Lok Sabha Speaker Om Birla too held an all-party meet to ensure a smooth monsoon session. But the upcoming assembly polls and political necessities will generate even more heat in the parliament. With Rahul Srivastav, Mausami Singh and Manjeet Negi, Bureau Report, India Today. Now, BSP chief and former Uttar Pradesh Chief Minister Mayawati made attempts to connect with the Brahmin community as she began campaigning for the Uttar Pradesh Assembly polls. She announced a conclave for Brahmins and slammed the BJP for misguiding the Brahmins at large. Let's take a listen. Months to go for big Uttar Pradesh elections. After PM Narendra Modi's poll waggle on Thursday, it's former Chief Minister Mayawati who has started her campaigning. This time, the Dalit icon has her eyes firmly set on the Brahmin voters, accusing the BJP of duping the community, which has been its loyal voters. Maya even appealed the community to vote for her in 2022. मुझे पूरा भरोसा है कि अब ये ब्राह्मण समाज के लोग इस पार्टी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को, इनके किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे। Making her intentions clear, Mayawati announced that the party will hold a Brahmin conclave on July 23rd in Ayodhya. The Sammelan will be organized by party's National General Secretary Satish Chandra Mishra. ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। But Mayawati did not forget her Dalit vote base. She praised them by claiming that they never got swayed by either the BJP or Congress and stood by her side. मुझे उत्तर प्रदेश के खासकर दलित वर्ग के लोगों के ऊपर नाज है, गर्व है। अभी तक यूपी में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे ये पिछला विधानसभा का आम चुनाव हुआ है, तो ये लोग इनके बहकावे में नहीं आए और एक तरफा अपना वोट इन्होंने बहुजन समाज पार्टी को दिया।
Maya's rivals accused her of playing caste politics. BJP said that Maya has insulted Brahmin voters in the past with provocative casteist slogans. मायावती जी ने फिर ब्राह्मणों का अपमान कर दिया है। ब्राह्मण बहक गया। ब्राह्मण प्रबुद्ध होता है, ब्राह्मण की पहचान उसकी विद्वता के नाते होती है, और ब्राह्मण बहक गया ये कहकर के ब्राह्मणों का अपमान करने का काम। Congress claimed Mayawati and the BSP have lost their relevance in Uttar Pradesh politics. बहुजन समाज पार्टी आधार खो चुकी है। स्पष्ट तौर से बहुजन समाज पार्टी का जो अपना एक उसकी जो अपनी एक नीति थी वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। Mayawati, facing poll reverses, is looking to expand her vote base. Her traditional Dalit base is getting eroded by the BJP and Bhim army. Some of her Muslim voters are also getting swayed by the SP and Asaduddin Owaisi's AIM-IM. Will this targeting of Brahmin votes help reverse her fortunes? Bureau Report, India Today. Mumbai reported heavy rainfall overnight. Over 30 people were killed, several others injured in Mumbai after they were trapped under houses that collapsed due to landslides following heavy rains in the state. Let's take a quick look. Monsoon wrath in maximum city. Heavy rains lashing the metropolis. Stopping road and rail traffic. Commuters on Sunday caught unawares as local trains ran late. The downpour turned roads and rail tracks into mini rivers and claimed at least 24 lives in wall collapses in Mumbai's Chembur, Vikhroli and Bhandup, triggered by landslides which sent boulders crashing down on human settlements. लोगों की मदद की, लोगों को बचाया भी, मतलब जो उसमें लोग दोनों तरीके के हो गए, मतलब कोई बचे भी है और कोई ऐसे भी जो ज़्यादा इंजर्ड भी थे और किसकी मृत्यु हो गई, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, जिनको प्रॉपर से लेके गए। हम लोग ने कुछ 3 से 4 लोगों को बचाया है, निकाला यहाँ से एम्बुलेंस रिक्शे में 4 से 5 लोगों को भेजा है पास करने के लिए। उसके बाद एम्बुलेंस में डाल के हमने राजावाड़ी हॉस्पिटल और किसी को शताब्दी हॉस्पिटल भेजा। NDRF rescue teams were able to save many from the debris. The wall which was holding things broke, and then you can see the spot. NDRF, Mumbai Fire Brigade, everyone on the rescue. They are basically going inside the debris, putting out all the mud and then rescuing people. It is a difficult cause, and you can see the rescue operations live which is going on here. And these were the houses when people now are standing on which the collapse happened. A 16-year-old boy was also killed in a wall collapse incident in Bhandup. The mishap trapping many others in the debris. Prime Minister Narendra Modi announced ex gratia of 2 lakh rupees for the dead and rupees 50,000 for the injured. Maharashtra Minister Aditya Thackeray also visited the wall collapse sites, announcing 5 lakh rupees compensation. जो अभी हमारे साथ नहीं है, जो कल हमसे निकल गए, उनको हम 5 लाख दे रहे हैं। जो इंजर्ड है उनका जो खर्चा है हम उठाएंगे। मैं यहाँ किसी पे उंगली उठाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं काम करने के लिए आया हूँ। मुझे लगता है अभी मदद कार्य सबसे जरूरी है। ये प्राकृतिक घटना है और उसे हमें ऐसे ही देखना चाहिए और जो मदद लगे वो करना जरूरी है। Heavy flooding also shut down the Bhandup water purification unit, disrupting water supply to most parts of Mumbai. Each year, lives are lost in Mumbai's rain due to different reasons, pointing towards a common thing, that is civic apathy. The question to ask is, how many more lives till the time the administration wakes up to a much-needed Mumbai's revamp? With camera person Mangesh Ambre, Mustafa Sheikh in Mumbai for India Today.